Hey guys, can you confirm if you can hear me? Hi, Mrutanjay. ऑडियो क्लियर है ना? हाय ऋतिक. मृतांजय ये नया नहीं है. सी दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑन क्वाड्रिलैटरल्स. नया नहीं है. ये कंटिन्यूएशन में है. नया बैच स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा. सो इवनिंग 8 PM को मृतांजय, ऋतिक, इवनिंग 8 PM विल बी स्टार्टिंग न्यू बैच. नॉट टुडे बट इन द नेक्स्ट 3 days. यस, अगले 3 दिन के बाद नया बैच स्टार्ट होगा इवनिंग 8 o'clock. ठीक है. हाय मनीष, हेलो इवांशी, हाय श्वेता, हाय अदिति. Okay, quickly go ahead, hit like on this video and we'll start. This is our second lecture on geometry on quadrilaterals. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer. I'm from Chennai with over 6 years of experience and I've trained over 2 lakh students. These are our 2 Telegram groups. Please get yourselves added to these groups, and these are all the upcoming and ongoing batches. You can take the subscription using my referral code Surana Live, get your 10% discount. You can also take the iconic subscription using my referral code Surana Live for the discount. Yeah. Okay, so what we are going to talk about today, quadrilaterals. We've already discussed everything that there is. We haven't discussed cyclic quadrilaterals, so that we'll be doing in the next session. Okay. चलो, तो वी आर डन विथ ऑल दिस. प्रॉपर्टीज वगैरह सब डिस्कस कर दिया. तो आई थॉट लेट्स डू सम क्वेश्चंस. तो आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल. हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल पुट अप द डायग्राम. क्विकली रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई एंड आंसर इट. जल्दी करो. हाय गौरव, हेलो प्रशांत. Quickly try this out. So the question is ratio of area of the square to the triangle. मृतांजय, वो आप पे डिपेंड करना है. वो आप पे डिपेंड करेगा. अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आएगा तो अटेंड करो, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है. मेरे को नहीं लग रहा आपको समझ में आएगा. तो माय सजेशन वुड बी यू कैन ज्वाइन इन आफ्टर अ कपल डेज. Yeah, sorry guys, there was a power cut. It's back. Can you guys confirm if you can hear me? यार जितने में छोड़ के चले जाते हो. या ओके, क्विकली ट्राई दिस क्वेश्चन. चलो, ब्यूटिफुल. गो अहेड, ट्राई दिस.
क्विक, सिर्फ रेशियो चाहिए, वी डोंट वांट द एक्चुअल एरिया, वी ओनली वांट द रेशियो। सुपर्ब। मृतांजय, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आएगा तो फिर अटेंड करो, वरना फिर नया बैच स्टार्ट कर लो, या उससे अच्छा होगा कि आप ज्योमेट्री के, अभी तक हमने आई गेस सिर्फ 4 लेक्चर किए हैं, वी हैव डन ओनली 4 लेक्चर्स ऑन ज्योमेट्री स्टिल, तो मे बी यू कैन वॉच दैट एंड ज्वाइन फ्रॉम ज्योमेट्री इटसेल्फ, या फिर 3 दिन बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे 8 PM को, तो तब आप ज्वाइन कर सकते हो नंबर सिस्टम में। मनीष says the answer is D. How about others? Anyone else? Anytime, Ritanja. और कोई? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, टेक टाइम, रीड इट केयरफुली, ध्यान से करो, आराम से हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी, और कोई? दुष्यंत ऑल्सो सेज डी, तो अब तक दुष्यंत और मनीष बोल रहे हैं डी है आंसर। और कोई? ओके, सबसे पहली बात, रेगुलर ट्रायंगल में हिंट दे देता हूँ। रेगुलर ट्रायंगल मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ रेगुलर ट्रायंगल? एनीबॉडी? रेगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस, रेगुलर मतलब इक्विलैटरल, दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल टू व्हाट? 60। तो ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। यस, अंदर का जो स्क्वायर है PQRS इज अ स्क्वायर विद साइड्स A, तो ये A को यूज करो, ट्राई यूजिंग A, यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS एज व्हाट? साइड स्क्वायर A स्क्वायर। ये तो सॉर्टेड है ना, इसका टेंशन नहीं है। अब यू वांट द एरिया ऑफ द एंटायर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए आपको। So what can you do? Now look at this. If ABC is an equilateral triangle, if ABC is an equilateral triangle and क्योंकि ये स्क्वायर है, because PQRS is a square, I know that PQ and RS are parallel to each other. Agreed? Yes, PQ and RS are parallel to each other. PQ is parallel to RS. Parallel है उसका मतलब क्या हो गया? If they are parallel, that basically means this entire thing, या फिर पूरा इसका एरिया निकालो। पूरा एरिया निकालने के लिए यू विल नीड ये लेंथ और ये लेंथ, ये हो जाएगा। इसका लेंथ निकाल के कर सकते हो √3/4 लगा के, या राइट मिलन। ट्रिग्नोमेट्री पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन अप्लाई स्पेशल ट्रायंगल्स, वही इनफ है।
देखो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अभी इससे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस दीज एंगल्स बिकम इक्वल, राइट। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, है ना। पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल वाला सीन, यस, दैट मीन्स ट्रायंगल ए पी क्यू इज ऑल्सो इक्विलैटरल, यस। तो अगर ये साइड A है, listen to this, if this side is A then this side should also be A, ये भी A होगा, why, because this is an equilateral triangle, yes। तो ये यहाँ तक AP पता चल गया A है, AP is equal to A, you need to find PB। तो इसको अलग अलग करना है एरिया तो भी कर सकते हो, यू कैन गो फॉर सेपरेट एरियाज ऑल्सो, और इफ यू वांट टू कंबाइन दिस एंटायर ट्राइंगल एंड देन डू इट, स्टिल यू कैन, राइट। सिर्फ पीबी ढूंढना है अभी, है ना, वी हैव टू फाइंड पीबी। सो ध्यान से सुनो, दिस साइड इज ए, सिंस दिस इज अ स्क्वायर, अंदर स्क्वायर है मतलब ये 90 होगा, अल्टीमेटली ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्रीज, करेक्ट। एंड व्हाट हैपेंस इन अ 30 60 90 स्पेशल ट्रायंगल, कोई बताएगा? 30 60 90 स्पेशल ट्रायंगल, यस। अगर 30 के सामने वाला साइड, 30 के सामने वाला साइड A है तो 60 के सामने वाला साइड √3/2a होगा, और 90 के सामने वाला साइड 2a होगा, है ना। Yes, A √3/2a and 2a, agreed? A, sorry, √3/2 नहीं, √3a, A √3a and 2a, yes guys, यार है क्या समझ में? अपन ने ट्रायंगल्स में बात करी थी इसकी, 30 60 90 स्पेशल ट्रायंगल की। How many of you remember? कितनों को याद है? 30 के सामने वाला अगर A है तो 30 के सामने वाला, if this is X, A तो ऑलरेडी यूज हो रखा है तो X यूज करते हैं। 30 के सामने वाला X है तो 60 के सामने वाला √3x है, और 90 के सामने वाला 2x है, यस। अब हमें क्या चाहिए? 90 के सामने वाला, अपने पास क्या है? 60 के सामने वाला, yes, 60 के सामने वाला A है, so if √3x is equal to A, we need 2x, तो 2x क्या हो जाएगा? 2/√3a, करेक्ट, एग्रीड। 2x क्या हो जाएगा? 2/√3a, yes। तो ये A है और ये 2/√3a, एग्रीड। तो अभी अपने पास क्या है? अपने को पूरा साइड मिल चुका है, पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड मिल गया, है ना। मिला कि नहीं गाइस? पूरा ये साइड क्या हो गया? साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, A प्लस 2/√3a, या इससे अपन कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is √3/4a square. Definitely Ankit, definitely √3/4 into a square क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसको √3 + 2/√3 into a होल स्क्वायर कर लो, यस। एलसीएम लेके a को कॉमन निकाल रहे हैं अपन, we've taken LCM √3a + 2a/√3, so this happens, yes। So what would you get here? Area of this triangle would become, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक √3 रहेगा, so you will have √3 + 2/4√3,
ए स्क्वायर। यस, अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसका और ए स्क्वायर का रेशियो निकालना है ना। दैट विल गिव अस आवर आंसर। यस, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ और फिर आई गिव यू द रेशियो। क्या हो जाएगा, ये नया पेज में करना है, नया पेज में करते हैं। √3 + 2 द होल स्क्वायर बाय 4√3। किधर गए, या √3 + 2 होल स्क्वायर बाय 4√3, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए स्क्वायर। हाँ, एक ही बात है ना मिलन, आप tan 60 लगाओगे, यू विल गेट इट इन टर्म्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ही ढूंढना है, तो दैट्स इट। बट यू डोंट वांट द लोअर साइड, लोअर साइड भी निकाल सकते हो, अगर चाहिए तो ये भी निकाल सकते हो, विच एवर वॉट एवर वर्क्स। तो ये क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर इज 3 + 2 स्क्वायर इज 4 + 2 times 4 times √3 times a square by 4 times √3। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली वी विल हैव 7 + 4√3 by 4√3 a square। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये रहा। यस, स्क्वायर का क्या है, a square। सो रेशियो ऑफ दिस टू दिस निकालना है ना, स्क्वायर टू ये निकालना है, या वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ए स्क्वायर, area of square by area of equilateral triangle, that is a square by 7 + 4√3 a square by 4√3, ये ऊपर आ जाएगा 4√3। yes, so what do you have ultimately, a square cancel, yes, you have 4 times √3 by 7 + 4 times √3। Here looking at the answer choices को देखे, we can just multiply with √3 ऊपर और नीचे। yes, if I do that, multiply √3 here and √3 here, क्या हो जाएगा, we will have 4 into √3 square, which is 4 into 3 12 by 7√3, 12 plus 7√3। this is our answer, ratio of area of the square to area of equilateral triangle। yes, which is what, option A। समझ गए? so this is how the questions would be, right? questions अभी आप अगर सोच रहे हो, चलेगा ना मिलन, लोअर भी निकाल लो चलेगा, अल्टीमेटली अपने को एक साइड चाहिए, बस एक साइड मिल गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो टेंशन नहीं। क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स गाइस? पेशेंस की बहुत ज़रूरत होगी गाइस, ज्योमेट्री में पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। आप अगर सोचो कि हर क्वेश्चन ऐसे 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में हो जाए, वैसा नहीं होता है ना। ज्योमेट्री ईजी है ऑफ कोर्स, but then you'll need a lot of patience। cool, got it? चलो अगला क्वेश्चन चलेंगे। so what is the answer, option A। let's move to the second question now। try the second question guys। so with a rhombus, since rhombus is a parallelogram, क्योंकि rhombus एक parallelogram है, area of rhombus
इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. हाइट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, हाइट होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा हाइट. समझ रहे हो? ये हाइट है, ये बेस है. बेस इंटू हाइट और ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स का half of the product of the diagonals. This will help you. ये आपकी मदद करेगा. Quickly try this now. अब इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन. Hi Preetam. Guys, if you haven't hit like on this video कर लेना, ठीक है? हाँ जी गैस. हाय सिल्विया. हेलो. Gauri says B. Superb. Others? Milan also says B. Very good. मिलन के हिसाब से भी आंसर B है. $34.4. So what do we know about a rhombus? Rhombus के बारे में हमें क्या पता है? All sides are equal. सारे sides equal हैं, right? ये base height हटा देते हैं. And बस correct मिलन. And what do we know? We know that the diagonals bisect, diagonals equal, and they bisect at 90 degrees. Correct? Yes. So what do we need? We need sum of the diagonals, right? Sum of the diagonals. तो अगर इसको A ले रहे अपन, so first let's find out A. क्या बोल रहे हैं? Sum of four sides is 56. That means 4 times A is 56 or A is 14. Yes, so we found out what the side of each length of each side is. Yes, 14. What else could we do? We could use Pythagoras theorem. So if this is A
this is B, sorry, diagonals bisect हो रहे हैं, equal नहीं है ना? Okay, so if I take this as C, this as B, then what can I write? I can write according to Pythagoras theorem, A square is equal to B square plus C square, है ना? Hypotenuse square is equal to the other two sides का square. A square क्या है? A is 14, so A square will be 14 square, which is 196. This will be equal to B square plus C square, 196. So one part of the equation ये रहा. Another we told what, that half the product of the diagonals. तो अगर ये B है तो ये भी B होगा, है ना? I'll rewrite this. Diagonal 1 will be what? B plus B, 2 times B, and C plus C, 2 times C. So 2 times B into 2 times C by 2, or 2 times B into C. Yes, 2 times B into C is how much? 100. Are you getting this? 2 times B into C is 100. अब अपने पास क्या है? B square plus C square है. We have 2 times BC also. We want B plus C. तो कैसे निकालेंगे? B plus C whole square रख के, right? B plus C the whole square is equal to B square plus C square plus 2 times BC. B square plus C square 196, 2 times BC 100. What do you get? B plus C the whole square is 296, or B plus C is square root of 296. Yes, यहाँ पे use the calculator or look at the answer choices and do it, either which ways. Yes, 34.4 into, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? या सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ, b प्लस सी इज दिस, ये पार्ट b है, ये पार्ट c है, अपने को 2 टाइम्स चाहिए, राइट? सो 2 टाइम्स b प्लस c, और बेसिकली 296 का स्क्वायर रूट इज 17.2 अप्रोक्सीमेटली. यस, तो व्हाट वी वांट इज 2 टाइम्स b प्लस c, क्योंकि ये b है, ये भी b है, ये c है, ये भी c है. 2 टाइम्स b प्लस c इज 17.2 का डबल 34.4. This is the sum of the diagonals, d1 plus d2. Got it? Any doubts here, guys? समझ गए क्या? So area of rhombus is what? Half the product of its diagonals. Yes. This part very important. This part will be necessary. Otherwise, इसके बिना आंसर नहीं कर पाओगे. Cool. Half times the product of the diagonals will give you the area of that rhombus, or you can go with parallelogram का भी area, because a rhombus is technically a parallelogram. Done. चले next. Shall we move on? Next question. Okay, this is a long question. आराम से पढ़ो इसको, ध्यान से पढ़ के आंसर करो. Long yet easy question. Okay. Guys, अगर अब तक लाइक नहीं किया है वीडियो पे तो कर लेना, ठीक है? Right, Milan.
कर रहे हो ट्राई? Very common question this is. Gauri Manish says C. Gaurav says D. Others. Technically this question has nothing to do with geometry, right? Technically this question has nothing to do with geometry. Read the question carefully. It says a farmer decided to build a wire fence along one straight side of his property, right? So there's this property, there is a one straight side there, one straight side. What they're saying is, first initially he decided to place them at a 6 meter gap, right? So let's say if I place one here, after 6 meter another, yes, 6 meter gap mein he was planning on placing them, right? And so on. So he bought and then realized that there were 5 less. Yes, 5 were less. Okay, ultimately what he did was he placed them 8 meters apart. So if the first one is here, then he placed one 8 meters apart. Another one also 8 meters apart. Are you getting this? 8 meters apart. And it was sufficient, it seems. After placing them 8 meters apart, it was sufficient. So what does it mean? At 6 meter difference also it worked out, 8 meter difference also it worked out. So technically length should be what? A common multiple of both 6 and 8, correct? Should be perfectly divisible by 6 and also by 8. Not 120 meter is the only term that is divisible by both 6 and 8, correct? Yes. So length is what? 120 meters. Yeah. Now 120 meters. Yes, 120 meters. He is planning on placing them how far? 8 meters apart. Correct? Would you agree? 8 meters apart. Yes. So if you go to 120 by 8. Yes, if you do 120 by 8, what do you get? 120 meters overall with an interval of 8 meters. We get 15, not posts, 15 gaps. Are you getting this? These are 15. 1, 2, 3, 4. ऐसे करके there are 15 gaps. Yes, but what is the question asking? How many posts did he buy? Yes, that means you are either missing out one at the bottom or one at the top because you did not count this. So 15 gaps basically means what?
you will need 16 posts. Yes, for 15 gaps you need 16 posts, correct? It's like placing sticks. If you want one gap, you need 2 sticks to get one gap. Yes, if you need 2 gaps, you need an extra stick. 2 gap, you need 3 sticks, correct? And so on. So option C is actually a trap. The right answer is option D. 120 meter and 16 posts. Clear? Yes, नहीं थीटा पे ये नहीं होता. This entire thing is relied upon that only. थीटा पे नहीं होता. ठीक है. फिर आप you would have used this property 5 less करके फिर ट्रायल एंड एरर करते. यस, ट्रायल एंड एरर के कितने में 5 लेस होने पे होगा. यस, बट वेरी लॉन्ग, लेंदी हो जाएगा. अगर ये थीटा होता तो ये बहुत लेंदी हो जाता. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, करो ट्राई जल्दी से. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करो आराम से, जल्दी से ट्राई करो. You have to find out the value of x, that's it. This is a very common question. Are you guys trying? B, C, Manish, Ivanshi, Gauri and Gaurav say B. 3. Milan says C, both 7 and 3. बाकी लोग only information given to us is PQ is parallel to RS, and by the looks of the diagram we know it's a trapezium, right? That's the only piece of information we can get from it, that this is a trapezium. We also do not know if this is an isosceles trapezium, right? समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, what can we use since these are parallel lines, since PQ is parallel to RS,
यस पी क्यू और आर एस पैरेलल है और ये हो गया आपका, दिस बिकम्स योर ट्रांसवर्सल, क्यू आर बिकम्स द ट्रांसवर्सल, क्यू आर बिकम्स द ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, करेक्ट। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यस। सेम वे पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी एस इज द ट्रांसवर्सल। अगर पी एस को अपन ट्रांसवर्सल लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बिकम इक्वल टू दिस एंगल, यस। सो इससे अपन ने क्या प्रूव कर लिया, with this angle OPQ OQP is equal to angle ORS. यहाँ पे we proved OPQ is equal to OSR, or we could have proved this also. These two angles are also equal because vertically opposite angles, right? Angle POQ is equal to angle ROS. Why? Because vertically opposite angles. Yes. With this, what we have to prove is triangle POQ is similar to triangle ROS. अगर ये similar हो गए तो what can we say? We can say that 1 by this, yes, RO by OQ, RO by OQ, or in this case OQ by OR should be equal to OS, OP by OS. Do you agree? Do you agree with this, guys? तो OQ क्या है, x plus 5, OR is 1 is equal to OP क्या है, 13x minus 1, 13x minus 31, and this would be x minus 2. So you'll get a quadratic equation here. Yes, cross multiply करोगे quadratic equation आ जाएगा. What will you get? X plus 5 into x minus 2 will become x square plus 5x minus 2x plus 3x minus 10 is equal to 13x minus 31. उसको भी यहाँ पे लेके आ जाओ. You will have a quadratic equation. X square minus 10x plus 21 is equal to 0. Yes. तो ये क्या हो जाएगा? This you can split it as 21 can be split as 7 and 3. So this you will have x is equal to 7 or 3. मतलब x equal to 7 भी satisfy करेगा, x equal to 3 भी satisfy करेगा. So people who said only option B, जिन्होंने सिर्फ ऑप्शन B बोला है, जिन्होंने भी ऑप्शन B बोला है, this is true, 7 is also true, therefore your answer will be both A and B. ठीक है. गौरी, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. देखो इसको इस जो ये जो ट्रायंगल है, राइट, आई विल हाईलाइट एंड शो इट टू यू. हाईलाइट करके बताता हूँ. इस ट्रायंगल में अपन क्या बोल रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, राइट. तो इसको उल्टा करोगे, इसको फ्लिप करोगे और फिर मिरर इमेज ले लोगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. बस एक के ऊपर एक रखना है. वंस यू कीप वन अपॉन द अदर, यस, एक के ऊपर एक कर लोगे तो अल्टीमेटली यू विल गेट योर प्रोपोर्शनल साइड्स. यस. तो क्या करूंगा मैं, आई विल, आई विल पुट I'll put ये दोनों एक के ऊपर, ये दोनों एक के ऊपर और ये दोनों एक के ऊपर. तो मेरा ट्रायंगल ऐसे रहेगा, एक बड़ा ट्रायंगल, यस,
और एक छोटा ट्रायंगल, ये रहेगा O, दिस विल ऑल्सो बी O, टेक्निकली एक ही है बट या O, दिस विल बी, अगर ये R है और ये S है तो ये Q होगा, ये P होगा। समझ में आया अभी गौरी? हाँ मिलन, डायरेक्ट भी आप आंसर चॉइस रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो अभी देखो, अभी क्लियर हो गया। नाउ सी व्हाट हैपेंस, OQ बाई OP, OQ बड़ा वाला टू छोटा वाला अगर कर रहे हो, yes, if you are doing बड़ा वाला टू छोटा वाला का रेशियो then do it, और छोटा वाला टू बड़ा वाला either which ways। OQ by OR is the same as OP by OS, समझ गए? which should be same as PQ by RS, got it? तो ये सबसे फास्ट वे है, मतलब जस्ट इमेजिन दैट यू आर रिप्लेसिंग वन ऑन दी अदर, जो भी इक्वल इक्वल है उनको साथ में रखना। ओके, try this question now. Hi Anshuman, right Manish, superb। चलो, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना गाइस। Read the question carefully and then answer. कर रहे हो क्या? पेरीमीटर और एरिया इक्वल होना है। इंटीग्रल मतलब गौरी, इंटीग्रल मीन्स इट शुड बी एन इंटीजर। इंटीजर मिलन सेज डी, नन ऑफ द अबाव। क्या आंसर होगा फिर मिलन? इफ योर आंसर इज डी तो क्या आंसर होगा? Milan says 0. There are no such rectangles possible. केशव आपका क्या आंसर है? गौरी भी 0 बोल रहे हैं, इवांशी भी 0 बोल रहे हैं। ओके ओके, श्योर है क्या ये आंसर? कंफर्म है क्या? कोई रिस्क नहीं है इसमें? चलो ठीक है, लेट्स डू दिस एल्जेब्रिकली, देखते क्या होता है। वी आर सेइंग व्हाट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल
should be equal to the perimeter of the rectangle. एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. पेरीमीटर क्या है? 2 times लेंथ प्लस 2 times ब्रेथ, है ना? So you get LB would be equal to 2 times L plus 2 times B, or let's say 2 times breadth is equal to 2 times length minus length into breadth, or 2 times breadth is equal to, नहीं उल्टा होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस 2L. तो L को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? B माइनस 2. ये है कंडीशन. Yes, this is our condition. Now try different values. One thing is clear कि B has to be greater than 2, right? B has to be greater than 2. ये तो clear हो गया इससे, क्योंकि it is B minus 2 should be greater than that, right? B has to be greater than 2. तो let's try with 3. 3 से start करें. If B is equal to 3, if B is 3, what will you have? 2 into B, that is 6, will be equal to L into 3 minus 2, 1. So the length will become equal to 6. Yes, so this is one rectangle. क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, in this case area is length into breadth 18, perimeter will be what? 6 plus 6 plus 3 plus 6, 12 plus 6, 18. हो रहा सेटिस्फाई? हो रहा क्या सेटिस्फाई? यस नो गाइस? तो जीरो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया. जीरो इज आउट ऑफ क्वेश्चन. इट इज क्लियर कि जीरो कभी नहीं हो सकता. यस, नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन. सो दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. Now let's try another one. Second, let's say if B is equal to 4, what will happen when B is equal to 4? B equal to 4 होगा तो क्या हो जाएगा? This will become 8 is equal to L into 2. 2L is equal to 8, or L is equal to 4. Yes, so B4 L4. Is this a rectangle? B is also 4, L is also 4. ये rectangle है क्या? Is this a rectangle? Yes, no बोलो. Is this a rectangle? Yes or no? Guys, is this a rectangle or not? No. A square is basically a rectangle. Yes, square is a subset of rectangle. Please understand this. Every square by default is a rectangle. Rectangle, yes. Why? Because it is a square. तो ये भी accepted है. So we have one here, one rectangle, two rectangle. Please remember guys, a square is a rectangle, right? देखो पैरेललोग्राम के नीचे आएगा rectangle, rectangle के नीचे आएगा square. समझ रहे हो? पैरेललोग्राम के नीचे आएगा rhombus. Yes, rhombus के नीचे वापस क्या आएगा? Square. So a square is basically an intersection of rhombus and rectangle. समझ रहे हो? rhombus में क्या होता है? सारे sides equal होते हैं. All sides are equal. rhombus में. Yes. rectangle में क्या आता है?
all angles are equal. तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं, इफ आई टेक एन इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज, देन आई गेट अ स्क्वायर, जिसमें क्या है, साइड्स भी इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है. गॉट इट? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, नॉट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स. समझ गए? रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल. गॉट इट मनीष? यस. तो दो तो आ गए, मतलब 1 नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है, नन ऑफ द अबव हो सकता है, 0 नहीं है. अभी देखते हैं और कितने आएंगे. कैन वी ट्राई विथ 1 मोर? एक और ट्राई करके देखो. अपन ने 3 और 4 ट्राई कर लिया, अभी 5 लगा के देखते हैं. b इक्वल टू 5. व्हाट विल हैपन व्हेन b इज इक्वल टू 5? जब b 5 होगा तब क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? 10 इज इक्वल टू l इंटू 5 minus 2 is 3. Will this work out? L will become 10 by 3, which is not integer. Yes, not an integer. We want integral sides. Integer चाहिए, नहीं होगा. Yes, this is not there. बस 5 के बाद से आप कुछ भी ट्राई करोगे, इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगा. ट्राई करो. Try with 4. What will happen if b is equal to 6? अगर ट्राई कर रहे हैं तो you will have 12 रुको. 12 is equal to 4 times L, so 6 and length will be 4 क्या? 3. ये देखो 6 and 3 अपन ने ऑलरेडी कर लिया है. 6 and 3 अपन ने ऑलरेडी कर लिया है. 3 6 6 3 एक ही ट्रायंगल रेक्टेंगल है. मिलन, दिस इज 3 and 6. इसी को अगर मैं उल्टा ऐसे घुमा दूं, इसको अगर मैं घुमा दूं तो इट बिकम 6 and 3. रेक्टेंगल वही है. 3 cross 6 और 6 cross 3 इज द सेम रेक्टेंगल. तो ये काउंट नहीं होगा, ऑलरेडी काउंटेड, डुप्लीकेट है. यस. 7 वर्क करेगा? 7 विल 7 वर्क? 14 and 5, 7 नहीं वर्क करेगा. लेट्स ट्राई 8. इफ b इज इक्वल टू 8. 16 and 6 नहीं काम करेगा. इसके आगे कुछ भी काम नहीं करेगा. नन ऑफ दीज विल वर्क. यस, इसके आगे कोई भी काम नहीं करेगा. ट्राई कर लो. 8 भी तो नहीं करेगा ना मिलन. 8 नहीं करेगा. 16 और 6 का मल्टीपल होना चाहिए. वॉन्ट बी. लेंथ विल बिकम 16 by 6 which is 8 by 3, not an integer. So technically कितने हुए? Technically we have 1 and 2. Yes, so what is our answer? Option B, 2. There are 2 such rectangles जिनके sides अगर integer हैं, तो एरिया और पेरीमीटर इक्वल रहेंगे. ठीक है? कोई शक? एनी डाउट्स हियर गाइस? एनीबॉडी? नहीं ना? चलो अगला. इस पे डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम बनाना पड़ेगा. आप लोग जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम बनाओ. मेरे को भी बनाने में मुश्किल रहेगा ये डायग्राम. ठीक है, करो, ट्राई करो. तो ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा ही बना है. जल्दबाजी में ऐसा ही डायग्राम बना है. बेयर करो, एडजस्ट करो. करो ट्राई.
ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन फिर करते हैं ना, ख़त्म करते हैं गाइस, ख़त्म। ऑलरेडी बहुत कुछ पीछे रह चुका है, वो ऑलरेडी मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। ये डायग्राम सही नहीं है, बट दिस इज नॉट द राइट डायग्राम। आई एम गोना हैव टू इरेज दिस एंटायर थिंग, फिर इसको बनाएंगे, अपन ही बना लेंगे खुद ही। चलो करो ट्राई गाइस, जल्दी ट्राई दिस क्वेश्चन। Anybody answer? मनीष से सी, मनीष बोल रहे सी 96 कुड बी द आंसर। अदर्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, D112। हाँ पंकज, जीपी बनेगा। पंकज का आंसर सही है 128। बाकी मिलन बोल रहे हैं 112। गौरी आपका क्या आंसर है? नन ऑफ द अबव। आपका क्या आंसर है? व्हाट इज योर आंसर? चलो सुनो, क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एक स्क्वायर है, बेयर विद द डायग्राम। जल्दबाजी में बना रहा था तो बना नहीं बराबर से। दिस इज अ स्क्वायर, इसका साइड दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यस, अब ये क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर एक और स्क्वायर बना रहे हैं मिड पॉइंट्स को लेके। ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। यस, ऐसे एक स्क्वायर बना रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? दिस विल बी 4, दिस विल बी 4। क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट है। 4 4, ये राइट एंगल है। पिथागोरस थ्योरम से ये क्या बन गया? दिस विल बिकम 4√2। करेक्ट। तो देखो फर्स्ट वाले का एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर इज व्हाट? 8 × 8 64। एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर छोटा 4√2 4√2 4√2। So 4√2 into 4√2 which is 16 into 2 32। फर्दर क्या होगा? फर्दर क्या हो रहा है देखो,
3 में ही 124 हो गया है, नहीं होगा ना 3 में 124। वापस देखो यहाँ पे आधा 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 और आधा इसको मिला रहे हैं। यस तो ये क्या हो जाएगा, ये 4√2 है, ये भी 4√2 है, दिस वन इज ऑल्सो 4√2। What will this become? Again hypotenuse, right? यहाँ पे 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है, hypotenuse। तो ये क्या हो जाएगा, the new side will become, new side, this one in red will become how much? 4√2 square 2 times, which is, नहीं sorry, इसका आधा ना 2√2 square 2 times, which is equal to what? 4/8। क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? So this is 2√2, 4√2 by 2 midpoint 2√2, ये भी 2√2, ये क्या हो जाएगा, this will be 2√2 plus 2√2 square रूट, हाँ सॉरी, समझ रहे हो? सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 times 2√2 square basically, so 2√2 square will be 4/8 √16 which is 4। yes side क्या हो गया अभी, 4 हो गया, this is 4, this is 4, this is 4, this is 4। are you getting this? so A3 becomes what? A3 4 into 4 16। तो अब देखो GP बन रहा है, look at this, now you are forming a GP। yes divide by 2, yeah sorry, into 1/2 into 1/2। तो आपका GP बन रहा है, क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म A is 64, yes your common ratio is 1/2। this is, they are asking sum of infinitely decreasing GP, sum of GP that is decreasing, 64 32 16, फिर क्या आएगा 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 0.5 0.25 0.125 ऐसे होते रहेगा। so what is sum of infinite terms of a GP? A by 1 minus R, yes, which is how much? A is 64 by 1 minus 1/2 is 1/2, so this becomes 128। yes so what is the sum of all of these? 128 centimeter square, which is option A। got it? हाँ वही 3 बनाया, वो भी बराबर नहीं आया करके फिर मेरे को मिटाना पड़ा था। ठीक है 3 नहीं है, देखो व्हाट इज द वर्ड यूज्ड हियर, इनडेफिनेटली, बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं, नो स्टॉप टू इट। गॉट इट? आया क्या समझ में? ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देते तो अच्छा होता, बट ठीक है, समझने में आ गया ना, ये समझ में आ गया ना? yes superb। तो all you have to do is wait for a GP, see it will, there will always be a GP whenever this happens। जब कभी भी ये होता है वहां पे एक GP डेफिनेटली रहेगा। आपको याद है अपन ने ट्रायंगल में भी किया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट्स को लेके, उसको लेके ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट्स को लेके, उसको लेके ट्रायंगल बन रहा है मिड पॉइंट्स को लेके, इसमें भी GP बना था, याद है? ये अगर A है तो ये क्या था, A/4, ये अंदर का क्या हो गया था, A/16, याद है ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पे भी GP बनेगा। एरिया अगर A है तो अगले वाले का A/4 था, फिर A/16, फिर A/64, सो ऑन, है ना? हाँ, क्या मिलन। चलो
circumcised. ठीक है, ट्राई करके देखो ये क्वेश्चन, ट्राई करो, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट. This is not 900, this is 90 degrees. क्या हुआ मनीष, क्या बोल रहे हो? ये रहा डायग्राम आपका. हियर्स द डायग्राम. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है. बहुत सिंपल है, जल्दी से कोशिश करो. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. क्विकली ट्राई दिस. Pankaj, geometry is simple provided you know how to change your perception, है ना. क्वेश्चन के हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे तो हो जाएगा. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो. हमें इसका रेडियस ढूंढना है. आप लोग कर रहे हो ना ट्राई? गिवन इंफॉर्मेशन लिख लो. DM is 1 centimeter, GN is 4 centimeter. हमें रेडियस निकालना है. Okay, so to answer this question you will need some properties of circle. सर्कल्स के कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए होंगे. एक, tangent is proportional to radius.
tangent is proportional to radius. Number 2, two tangents from same point are equal. ठीक है, तो इफ यू डोंट वांट टू डू दिस नाउ, आई अंडरस्टैंड, इसको फिर बाद में करते हैं. लेट्स डू इट आफ्टर वी आर डन विद सर्कल्स, है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे. सो लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड. यस, इसमें सिंपल है, इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है. देखो ये 1 है तो ये भी 1 रहेगा. क्यों ये 1 रहेगा? क्योंकि इसी पॉइंट से ये टेंजेंट है, उसी पॉइंट से ये भी टेंजेंट है, राइट. तो 1 हो गया इक्वल, राइट. एंड इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहेगा, दिस इज परपेंडिकुलर. यस, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है. यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, देन व्हाट विल हैपन? इफ दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो अल्टीमेटली ये 3 हो गया. यस, समझ रहे हो? अब आप अगर d इसको कुछ भी बुला लो, k, इफ यू फाइंड आउट डी के का लेंथ, यस, इफ यू कैन फाइंड आउट डी के का लेंथ तो बन जाएगा. यस, हाउ वुड यू फाइंड दैट आउट? देखो, अगर ये 3 है, ये 3 + 1 4 है ना, जी एन क्या है? 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये टेंजेंट आ रहा है, इसी पॉइंट से ये टेंजेंट निकल रहा है इधर तक, तो ये भी यहां से निकल रहा है इधर तक, तो ये 4 हो गया. तो टेक्निकली ये पूरा चीज कितना हो गया? हाउ मच इज दिस एंटायर थिंग? पेन किधर है? दिस एंटायर थिंग बिकम्स 5. 4 + 1 5. यस, तो बाद में आपको ये मिल जाएगा 4 करके. कैसे? यू नो दैट, टेक ट्राइंगल डी के जी. DG is 5 centimeter, DK is 3 centimeter. Ultimately, DK नहीं, GK is 3 centimeter. तो DK will become equal to root of DG square minus GK square. Correct? Pythagoras theorem. Yeah, if this is 5, this is 3, then dk has to be equal to 4, है ना. कैसे? 3:4:5 का रेशियो, 3:4:5, तो 3 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, बाकी 4 पार्ट्स. dk अगर 4 है, अपना आंसर हमें क्या चाहिए? ये dk and mn will be equal, है ना. dk will be equal to mn, which is basically 2 times the radius, या 2 times cn radius है, तो you get cn is equal to 2 centimeters. मतलब इसका रेडियस क्या हो गया? 2. ये वाला क्वेश्चन हम वापस करेंगे आफ्टर लर्निंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है. ये जो सर्कल्स की प्रॉपर्टीज है, ये पढ़ने के बाद वापस करेंगे, डोंट वरी. ओके, yes, we will do this question again later. Okay, ये भी सर्कल रिलेटेड है, let's do this later. चलो ये वाला करो. Do this is simple. ये काफी इजी है. जल्दी से करो ट्राई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है.
Answer. Very simple question this one is. So they've told here is ABCD. Suchi says B. So ABCD is a square. That means this is 4 centimeters, this is 4 centimeters, this is 4 centimeters, this is 4 centimeters. Yes. What else is told? They've told that P is the midpoint. If P is the midpoint, that means this is 2 centimeters, this is 2 centimeters. Yeah, since this is a square, this is 90 degrees. Okay, can we find PB? How much would be PB? PB would be 4 square plus 2 square whole root. Correct? So 16 plus 4, 20. 20 is 4 into 5, 2 root 5. है ना? So we found out how much PB is, 2 root 5, but what we want to find our area of triangle BEC. BEC का triangle का area क्या होगा? Half times BE times EC, है ना? Right angle triangle है, मतलब half times base into height. Yes. So to get that information, what could you try? वो information लाने के लिए आप क्या try कर सकते हो? You could try drawing another perpendicular, right? No, not perpendicular. Midpoint से वहाँ पे join कर लो. Let's say. So from the same midpoint P say from the same midpoint P, if I draw a line to join here, yes, इसका length भी क्या होगा? Its length will also be same. इसका अगर 2 root 5 है तो इसका भी 2 root 5 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर टू मिड पॉइंट दोनों इक्वल ही रहेंगे. Yes, getting it? So what is our aim? Our aim is basically to get BE and EC, right? BE या EC का लेंथ लेना है अपने को. Yes, we need BE का लेंथ या EC का लेंथ, कोई एक. Yes. So if I draw a perpendicular here, we can go. If I draw a perpendicular here, 90 पे, let's say PK, so you can use PK into 4 as the area of this triangle. उसी को फिर आप ये यूज करके you can find EC का लेंथ, है ना? तो how will you find PK का लेंथ? PK का लेंथ is the same, 4 centimeters, है ना? PK is basically equal to AB, which is 4 centimeters. Yes. So area of triangle PBC is equal to half times PK times BC. Half times PK times BC, correct? Getting it? Which is what? Half times 4 times 4, that is equal to 8 centimeters square. And for the same area of triangle PBC, I can write this area of triangle PBC as what? Half times EC times PB also.
है ना, हाफ टाइम्स EC टाइम्स PB भी लिख सकते हैं। तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, PB इज 2√5, सो यू विल गेट EC इज इक्वल टू 8/√5। एग्रीड? एग्रीड एवरीबॉडी? EC का वैल्यू मिल गया 8/√5 सेंटीमीटर, सो वन पार्ट ऑफ इट इज डन। EC इज 8/√5 सेंटीमीटर्स। Yes, now we want what? We want BE का length. Yes, how can you find BE का length? Right angle triangle use कर सकते हो. This is a right angle triangle. Yes, so in triangle BEC, yes, you know EC is equal to 8/√5. You know BC is equal to 4. So can you find EB? EB will be equal to how much? 4 square minus 8/√5 whole square का square root. Yes. तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 64/5 का रूट। यस, विच गिव्स अस हाउ मच? 80 minus 64 is 16. 16/5 whole root is 4/√5. Done. So now we have EB and we have खत्म, BE भी मिल गया, EC भी मिल गया। Yes, so what will be area? Area of triangle BEC is equal to half times BE times EC, which is equal to half times BE is 4/√5. This is 8/√5. which is 16/5. That's nothing but 3.2 centimeter square. Option C. आया guys, समझ में आया? See if you can find any alternative here. कुछ alternative अगर निकल सकता है तो और भी अच्छा, वरना ये एक ही तरीका लग रहा है मेरे को। Is there any alternative that you can think of? चैट लोड नहीं हो रहा। मनीष, कल से सर्कल स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? नहीं, कल पॉलीगन्स करेंगे, उसके बाद सर्कल्स करेंगे। एक बार पॉलीगन्स खत्म करेंगे, उसके बाद सर्कल्स, ठीक है? डन एवरीवन? Say yes and we'll go to the next question. Is there a next question? हाँ, quickly try. कोशिश करो जल्दी से। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी दिस वन इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
हाँ सोची, वी कैन. सिमिलर, कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर? ठीक है. Manish says A. बाकी इसके पहले वाले में क्या? ठीक है, सोचिए. गौरव says D. Keshav says A. Pankaj says D. Suchi says A. Okay. So you can do this in two methods. You can do it in the standard method or also using reverse engineering. First, let's start using a standard method. Okay. So there is a rectangle. Yes, length, breadth, and this is the diagonal. Okay. So what is the question saying? Instead of walking along two adjacent sides of a rectangular field, a boy took a shortcut along the diagonal and saved a distance equal to half the longer side. So what are they saying? That B plus L, this guy, our guy, instead of walking like this, instead of walking like this and then like this, he did what? He took the diagonal. How much will be the diagonal? How much will be diagonal? Diagonal will be square root of b square plus l square. Correct? Square root of b square plus l square. So what they're saying, he saved half the distance of the longer side, which is L. That means from this, from B plus L, if I subtract half the distance of L, I'll get my diagonal. Correct? Yes or no? So what happens here? B plus L by 2 should be equal to B square plus L square whole root. Taking square on both sides, you will get B square plus L square by 4 plus 2 times BL by 2. 2 cancel ho gaya. This is equal to B square plus L square. B square gets cancelled off. So what do you get? You get an expression where you have B times L is equal to L square minus L square by 4, which is 3L square by 4. Yes, the square or L gaya, you get shorter side to longer side is equal to 3 by 4. Got it? Guys, this is using your standard method. इसमें कोई शान पट्टी नहीं, बस using direct method, है ना? Are you guys able to hear me? Audio check.
क्या प्रॉब्लम है यार? गाइज, आर यू एबल टू हियर मी? Okay, so this is one method. The other method is going reverse engineering. Yes, go reverse engineering. You know that if the ratio is 1:2, अगर यहाँ ये ratio 1 है और ये 2 है, तो this won't be an integer, right? आपका diagonal जो है integer नहीं रहेगा. Yes, diagonal integer कब रहेगा? जब it is 3:4. Agreed? Because then this is 3 paths, this is 4 paths, ultimately this will become 5 paths. Yes, and you know कि 5 में से, yes, 5 में से if you add half of this, that is 4/2, this will be equal to 3 + 4. समझ रहे हो? So 7 is equal to 7. Satisfied, option D. तो ये एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू गो बाय रिवर्स इंजीनियरिंग. यस, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आंसर, रेशियो, बस. यू डोंट वांट to do all the step and prove anything, right? सीधा सीधा आंसर है, खत्म. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. जल्दी से ट्राई करो इसको. क्विकली ट्राई दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन. I'll start marking information. Okay, this is 90, DCH is 90, angle O is 90, angle H is 90, angle K is 90, angle L is 90, angle M is 90, angle I is also 90. Yes. Anyone answer to this question? चलो आखिरी क्वेश्चन है, फिर छोड़ देता है. सो 2 times CH, अगर मैं CH को A ले रहा हूं, इफ आई से CH is equal to A,
then AB is 2 times CH, which is 2A. BC is 2 times CH, which is 2A. CD is A. EH is 2A. This पूरा चीज is 2A. So this is A, this will also be A, right? ये A है तो ये भी A रहेगा. FK is also 2A, मतलब ये भी A है, ये भी A है. HK A है तो ये भी A है, ये भी A है. KL 4 times KL. Yes, AB is 4 times KL. That means KL should be A by 2. Correct? डायग्राम थोड़ा सा उठपटांग बना है. डोंट डायरेक्टली बिलीव द डायग्राम. तो ये A by 2, ये A by 2, ये A, ये आपका 2A. LM क्या है? LM is A. समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? 3 by 2A. A plus A by 2, 3 by 2A. Got it? अब क्या पूछा? What is the ratio of areas of the two quadrilaterals ABCD? ABCD, area of ABCD to area of DEFG. DEFG, trapezium DEFG. Yes, so first let's go for area of ABCD. Area of ABCD will be equal to, पहले तो ये triangle हो जाएगा यहाँ पे. Yes, let's call it X. Area of triangle AXD plus area of rectangle, rectangle XDCB. Yes, so that will be equal to what? 2A into 2A, half times 2A into 2A, base into height है ना. This should actually not, ये नहीं, sorry, ये A होगा. This is A, this is A. Yeah, so half times A into 2A plus A into 2A, which gives us 3 by 2 times A into 2A, जो कि 3A square. Yes, one part is done. For the next part, area of DEFG. Area of DEFG क्या बनेगा? DEFG, उसमें एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है. DEO, triangle DEO plus square EFOI plus triangle FIG. Yes, triangle DEO का क्या हो जाएगा? हाफ टाइम्स A into A, so half A square plus इसका A into A square plus triangle FIG का क्या हो जाएगा? half times A into A by 2, which is 1 by 4 A square. Correct? This is how much? Half plus 1 by 4 is 3/4. 3/4 plus 1 is 7 by 4 A square. हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, है ना? रेशियो ऑफ, so given ratio is 3A square by 7A square by 4, जो ऊपर चला जाएगा, which is 12 by 7. This is your answer. Got it? 12:7 becomes your answer. थोड़ा सा tedious है, थोड़ा सा confuse होने का chances है, but very much doable.
ठीक है, अंडरस्टूड गाइस, गॉट इट? कोई डाउट आपको? दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे. Thank you very much for being a part of the session, guys. This Sunday, day after tomorrow, you have your combat. Please become a part of it. Use my referral code Surana Live to access the test. This test is free. It is available for everyone to take, and I would suggest that you do take this test. There is also Ask a Doubt feature available for people who are Plus and Iconic subscribers. You can select Ask a Doubt, select a picture or take a picture from your phone camera, highlight it, give some information about the question, and then give some information and you will get the solution for your doubts. So you don't have to wait for solutions from different telegram groups or educators or and all, right? यहाँ पे officially आपको doubts के solution मिल जाएंगे. So to access that, you'll need the subscription. You can take Plus, you can take 12 or 24 months. You can also take these 1 month, 3 month and 6 months depending upon your needs. Use my referral code Surana Live, आपको 10% का discount मिलेगा. सेम वे इफ़ यू वांट आइकॉनिक, जहाँ पे आपको पर्सनल मेंटोर, पर्सनलाइज्ड टेस्ट रिपोर्ट्स एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन अलग से मिलेगा. यू टेक आइकॉनिक, यूज़ माय रेफरल कोड सुराना लाइव. इसमें भी 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, इसमें नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है. सो यूज़ माय रेफरल कोड सुराना लाइव, गेट योर डिस्काउंट. ठीक है, यस. Thank you very much for being a part of this session. I'll see you all tonight at 8 p.m. Until then, keep yourself safe and happy. Bye bye. Have a great day. Keep learning and let's crack it.